अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मेरे पास आए हैं हुआवे नोवा 2 प्लस iMei रिपेयर। तो उसको iMei रिपेयर करना है, इसके पहले iMei चेक करना है। इस डुअल iMei है, इसको चेंज करो। सबसे पहले आपको मोबाइल सेटिंग में जाना है और यहाँ से अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम को अबाउट फोन में जाना है। तो यहाँ मैं आपको देखता हूँ कि इसका सीपीयू के किरण के किया है और मॉडल किया है। तो ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर बिल्ड नंबर पर 2-3-4 बार क्लिक करना है तो आपको डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, डेवलपर ऑप्शन शो हो गया। तो यहाँ से मैं डेवलपर ऑप्शन को जाऊँ तो यहाँ OEM ऑलरेडी अनलॉक है और यहाँ आपको USB डिबगिंग इसको ऑन करना है। ओके, तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ से बैक आ जाना है और अपने डायल में यूज पोर्ट सेलेक्ट करना है। ये कोड आपको डायल करना है, जो ये मैं करता हूँ। ये कोड मैंने डायल कर दिया। तो ये इंटरफेस बैकग्राउंड में USB पोर्ट सेटिंग मैन्युफैक्चर मोड में आपको कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है।